Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to lecture 33, that is of advanced granulation technology. We were discussing rapid release technology in the previous sessions. We had completed the formulation related factors in previous lecture, and in today's class we will be discussing the granulation related factors. So here you can see some of the granulation related factors. What are the steps that are being carried out in dry granulation and wet granulation, what happens in these steps, and the possible factors that affect the dissolution. So the first step is same for both wet granulation and dry granulation, that is pre-mixing, where the mixing of drug and additives are being carried out. This mixing step actually affect the dissolution of the drug, and this can be discussed in detail in further this class. Improvement in the dissolution of the drug by interactive mixing can be done. The second step, which is associated with wet granulation but absent in the dry granulation, is wet massing, where the mixing of powder mass consisting of a drug and additive with a liquid binder is carried out. Dissolution is dependent on granulating equipment, the force applied to mix the powder mass, and duration of wet massing, as well as type and amount of the liquid binder that is being used in wet massing. The third step is a screening, which is carried out after wet massing and is again absent in dry granulation but is a consequent part of wet granulation. Here the extrusion of wetted powder mass through a screen to form granules is done. The possible factor that affect dissolution is the screen size. A screen size affects the granule size, which in turn will affect the dissolution rate of the drug. The another step, which is of dry granulation, is slugging and roller compaction, which is actually absent in wet granulation. Here the formation of powder plugs by compression is done. The dissolution is dependent on the duration and force of slugging or roller compaction. We have discussed in detail the effect of slugging and roller compaction in the process in previous lectures. The next step is milling, which is done after slugging or roller compaction, which is absent over here in wet granulation but is a consequent part of dry granulation. Milling of the powder plugs and the granule size affects the dissolution. Drying is a major part of wet granulation, which is done after screening, where the wet granules are dried and dry screening is carried out. Screening, dry screening here and here, dry granulation and wet granulation, they are both the major parts of this. Screening is the major part of both the dry and wet granulation, dry screening specifically. It is done to optimize the size of the granules, and granule size affects the dissolution rate of the drug. After screening, blending is carried out. Mostly blending is carried out when the granules are subjected to compression, blending of lubricant or glidant and super disintegrant with the granules. Dissolution is dependent on blending equipment, the force and duration of blending, and the quantity of the lubricant that has been added into the drug and excipient mixture or granules. Then the last step is capsule filling or tableting, which can be done of both type of granules, either the granules that are made by dry granulation method or the granules that are made by wet granulation method. The formation of capsules or tablets from the blended granules is carried out by specific equipments. Dissolution is dependent on the tableting force, the amount of compressional force that has been used to compress the granules into tablet dosage forms.
So let's discuss all these factors one by one in detail. The first step of both methods, which is interactive mixing, plays an important part in improving the dissolution of poorly soluble drug because the mixing of micronized drug with the appropriate additive reduces the cohesiveness of the drug particles, leading to a better dissolution of the drug. Now it improved the dissolution of an experimental drug by carrying out wet granulation in fluid bed and high shear mixer, and this could be attributed to the combined effects of employing the micronized form of the drug, a surface active agent, a super disintegrant, and reduction in the cohesiveness of the drug by interactive mixing. पहला स्टेप दोनों मेथड्स में ड्राई ग्रैनुलेशन और वेट ग्रैनुलेशन में इंटरैक्टिव मिक्सिंग का है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिसोल्यूशन प्रोफाइल के ऊपर, स्पेसिफिकली पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स की डिसोल्यूशन प्रोफाइल के ऊपर, क्योंकि मिक्सिंग माइक्रोनाइज ड्रग्स की अप्रोप्रिएट एडिटिव्स के साथ कोहेसिवनेस को रिड्यूस करती है ड्रग पार्टिकल्स की, जिसकी वजह से बेटर डिसोल्यूशन प्रोफाइल्स या बेटर डिसोल्यूशन ड्रग्स की अटेन होती है। गाओ एट अल ने डिसोल्यूशन एक्सपेरिमेंटल ड्रग की इम्प्रूव की वेट ग्रैनुलेशन से। वेट ग्रैनुलेशन फ्लूइडाइज बेड में और हाई शेयर मिक्सर के साथ जब की गई तो ये कंबाइंड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हुआ माइक्रोनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग। इसके अलावा उसके अंदर मौजूद सरफेस एक्टिव एजेंट्स, सुपर डिसइंटीग्रेंट्स और कोहेसिवनेस में रिडक्शन की वजह से इंटरैक्टिव मिक्सचर फॉर्म हुआ, और इंटरैक्टिव मिक्सचर फ्लूइडाइज बेड और हाई शेयर मिक्सर के अंदर फॉर्म होने की वजह से ग्रैनुलेशन जब की गई तो डिसोल्यूशन प्रोफाइल्स इन्हांस हुई। The first type of granulation factor that affects the dissolution rate of the drug is liquid binder. Bed granulation offers an opportunity for the transformation of crystal forms, and the choice of the liquid binder plays an important role in determining the final crystal form of the drug in the granules obtained. Transformation usually occurs during the addition of liquid binder to the powder mass during wet massing and drying of the formed granules. Addition of the binder could be viewed as suspending drug in a mixture of solvent and additives, hence encouraging transformation of anhydrates to solvated forms. If sufficient liquid binder is added, this could be viewed as a solution step and subsequent drying of granules as the recrystallization step. Thus, close attention has to be paid to polymorph conversion during wet granulation. वेट ग्रैनुलेशन के अंदर क्रिस्टल फॉर्म्स की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, और ये एक चॉइस प्रोवाइड करते हैं लिक्विड बाइंडर के लिए ताकि वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सके फाइनल क्रिस्टल फॉर्म के अंदर जो ड्रग ग्रैन्यूल्स से ऑब्टेन हुई है। ट्रांसफॉर्मेशन मोस्टली लिक्विड बाइंडर की एडिशन के बाद होती है, जब लिक्विड बाइंडर पाउडर मास के अंदर डाला जाता है और वेट मासिंग की जाती है, और उसके बाद ड्राइंग का स्टेप अटेन किया जाता है ताकि ग्रैन्यूल्स फॉर्म हो सकें। बाइंडर की एडिशन को अगर हम देखें तो बाइंडर की एडिशन इज़ लाइक सस्पेंशन ऑफ अ ड्रग, जिसके अंदर ड्रग मिक्सचर है सॉल्वेंट्स का और एडिटिव्स का, और ये इनकरेज करता है ट्रांसफॉर्मेशन एनहाइड्रेट्स की सॉल्वेटेड फॉर्म्स के अंदर। अगर सफिशेंट अमाउंट के अंदर लिक्विड बाइंडर एडिड है तो ये सॉल्यूशन स्टेप के तौर पे देखा जा सकता है, और जब हम इसकी ड्राइंग करते हैं, बाइंडर में मौजूद सॉल्वेंट की ड्राइंग होती है और ग्रैन्यूल्स फॉर्म होते हैं, तो रिक्रिस्टलाइजेशन का स्टेप अकर होता है। इसी वजह से पॉलीमॉर्फिक कन्वर्जन को एक क्लोज इंटेंशन दी जाती है ड्यूरिंग वेट ग्रैनुलेशन। एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ सिचुएशन इज़ थियोफाइलिन।
Theophylline readily converts to monohydrate form 2 upon exposure to water during wet granulation. इसकी एग्जाम्पल थियोफाइलिन है। थियोफाइलिन कन्वर्ट हो जाती है अपनी मोनोहाइड्रेट फॉर्म में, जो कि थियोफाइलिन फॉर्म 2 कहलाती है, जब इसे वाटर के साथ एक्सपोज किया जाता है ड्यूरिंग वेट ग्रेनुलेशन। This conversion could not be prevented by having high water absorbing capacity additive such as the silicified microcrystalline cellulose, because the minimal amount of water for effective wet massing was sufficient to trigger the conversion. Theophylline monohydrate under vacuum dehydration forms the metastable anhydrate 1 star. This metastable anhydrate on storage recrystallized to stable anhydrous form 1, and in the process formed solid bridges within the tablet. ये जो कन्वर्जन हो रही है थियोफाइलिन की मोनोहाइड्रेट फॉर्म 2 के अंदर, जब थियोफाइलिन को वाटर के साथ एक्सपोज किया जाता है, तो ये कन्वर्जन को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते हाई वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी एडिटिव डालने के साथ। लाइक अगर हम सिलिसिफाइड माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज ऐड करें वाटर के साथ ताकि वो प्रिवेंट कर सके इस कन्वर्जन को, लेकिन तब भी ये कन्वर्जन प्रिवेंट नहीं होती, क्योंकि जो मिनिमल अमाउंट रिक्वायर्ड है जिसमें वेट मासिंग होनी है वो इतनी होती है कि कन्वर्जन ट्रिगर कर देती है। थियोफाइलिन मोनोहाइड्रेट जो यहाँ फॉर्म हो रहा है वैक्यूम डिहाइड्रेशन में मेटास्टेबल एनहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। मेटास्टेबल एनहाइड्रेट स्टोरेज कंडीशन में अगेन रिक्रिस्टलाइज हो जाती है और स्टेबल एनहाइड्रस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये स्टेबल एनहाइड्रस फॉर्म प्रोसेस के अंदर सॉलिड ब्रिजेस बनाते हैं विद इन दी टैबलेट। A decrease in dissolution would result if the recrystallization process were not prevented. The use of water as the liquid binder also affected the dissolution of naproxen sodium because of the drug hydration, resulting in a poorer dissolution of the drug. जो मेटास्टेबल एनहाइड्रेट में थियोफाइलिन की कन्वर्जन हो रही है ये ऑन स्टोरेज हो रही है। इस मेटास्टेबल एनहाइड्रेट में कन्वर्जन की वजह से डिसोल्यूशन रेट डिक्रीज़ हो जाता है। अगर डिसोल्यूशन रेट की डिक्रीज़ को प्रिवेंट करना होता है या रेट ऑफ डिसोल्यूशन को इन्हांस करना होता है, तो रिक्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के दौरान ही इस कन्वर्जन को रोका जाता है या प्रिवेंट किया जाता है। वाटर का यूज़ एज अ लिक्विड बाइंडर निप्रोक्सिन सोडियम की डिसोल्यूशन के ऊपर भी इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है, बिकॉज निप्रोक्सिन सोडियम ड्रग हाइड्रेशन करती है और ये ड्रग हाइड्रेशन पुअर डिसोल्यूशन प्रोफाइल्स देती है निप्रोक्सिन की। Thus, if wet granulation has to be carried out for these drugs, and in order to maintain rapid dissolution, polymorphic conversion may be prevented by using ethanol as the liquid binder. अगर वेट ग्रैनुलेशन की ज़रूरत हो ऐसी ड्रग्स में जिनमें पॉलीमॉर्फिक कन्वर्जन हो सकती हो और वो पॉलीमॉर्फिक कन्वर्जन डिसोल्यूशन के रेट को कम करती हो, तो डिसोल्यूशन का रेट इन्हांस करने के लिए या रैपिड डिसोल्यूशन करवाने के लिए और पॉलीमॉर्फिक कन्वर्जन से बचाने के लिए हम वाटर को रिप्लेस कर देते हैं इथेनॉल से, जो कि एज लिक्विड बाइंडर यूज़ होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। The solubility of the drug in the liquid binder also affects the dissolution of the resulting capsules or tablets made from these granules. This was explained by the dissolution of a certain amount of zendotrine followed by the recrystallization of fine crystals during the drying phase of the granules. The subsequent enhancement in the dissolution was due to the finer crystals formed due to the recrystallization process. Thus, the drug had effectively undergone the micronization process during wet granulation.
ड्रग की सॉल्युबिलिटी लिक्विड बाइंडर में भी इफ़ेक्ट करती है डिसोल्यूशन के ऊपर, मोस्टली कैप्सूल्स या टैबलेट डोजेज फॉर्म में। इसको एक्सप्लेन इस तरह से किया जाता है कि जेंडोट्रीन एक ड्रग है जो रिक्रिस्टलाइजेशन करती है फाइन क्रिस्टल्स की ड्यूरिंग द फेज ऑफ ग्रैन्यूल्स। ये रिक्रिस्टलाइजेशन ड्रग की सॉल्युबिलिटी की वजह से हो रही है और रिक्रिस्टलाइजेशन की वजह से सब्सीक्वेंट इन्हांसमेंट होती है रेजोल्यूशन में और फाइनर क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं ड्यू टू रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। इसी वजह से ड्रग को माइक्रोनाइजेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है ड्यूरिंग वेट ग्रैनुलेशन। The quantity of liquid binder also give rise to different dissolution profiles. A low amount used would result in the production of smaller granules, and the resultant tablet form displayed much faster dissolution as compared to granules formed using a higher amount of liquid binder. लिक्विड बाइंडर की क्वांटिटी भी इफ़ेक्ट करती है डिसोल्यूशन प्रोफाइल्स को। अगर लिक्विड बाइंडर कम अमाउंट के अंदर यूज़ हो रहा है तो ये रिज़ल्ट करेगा स्मॉलर ग्रैन्यूल्स की प्रोडक्शन में, और ये स्मॉलर ग्रैन्यूल्स टैबलेट्स में जब प्रेजेंट होंगे तो ये जल्दी डिसोल्यूट हो जाएंगे, फास्टर डिसोल्यूशन प्रोफाइल्स शो करेंगे व्हेन दे आर कंपेयर्ड विद द ग्रैन्यूल्स जो कि हाई अमाउंट ऑफ लिक्विड बाइंडर से बने हुए होंगे। Besides forming larger granules, a higher amount of liquid binder used is also expected to increase the hardness of granules. Hard tablets will give rise to poorer dissolution because the tablet require more time to break up. लार्जर ग्रैन्यूल बनाने के साथ साथ अगर लिक्विड बाइंडर की तादाद की अमाउंट ज़्यादा होती है तो लिक्विड बाइंडर एक्चुअली ग्रैन्यूल्स की हार्डनेस को इंक्रीज़ कर देता है, और जितनी ज़्यादा टैबलेट्स हार्ड होती हैं उतना ही कम डिसोल्यूशन प्रोफाइल होती है टैबलेट की, और ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है टैबलेट को ब्रेक होने में या डिसइंटीग्रेट होने में, और सब्सीक्वेंटली वो डिसोल्यूशन रेट के ऊपर इफ़ेक्ट करता है। This observation was found to be dependent on the moisture content of the tablets. At moisture content of 1.6% and 2%, ticlopidine hydrochloride dissolution was highly dependent on the tablet strength. However, with moisture contents of more than 3%, the drug dissolution was independent of tablet strength. The second granulation related factor is granulating equipment. The use of appropriate granulating equipment also plays a part in the release rate of the drug. Acetaminophen beads made from extrusion spheronization were compared to beads made from pan coating. Beads made from pan coating displayed higher dissolution rates as compared to those made from the former method. This was attributed to the disintegration of pan coated beads, and the ones made from extrusion spheronization were denser and less friable the ones made from extrusion spheronization were denser and less friable due to the higher energy input during wet massing and thus did not disintegrate during dissolution. Thus, the selection of equipment for wet granulation affects the hardness of the granules and ultimately influences drug release. Chauhan et al. Also reported that granules made from high-speed shear mixer were lower in porosity as compared to those prepared from planetary mixers. Low porosity did not facilitate solvent penetration and hence caused poor drug dissolution. ग्रैनुलेटिंग इक्विपमेंट की सिलेक्शन और उसका प्रॉपर यूज़ भी ड्रग रिलीज़ के ऊपर इफ़ेक्ट कॉज करता है। एसिटामिनोफेन बीड्स को दो तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है, ईदर एक्सट्रूजन स्फेरिनाइजेशन के प्रोसेस से, जिसे पिछले लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया जा चुका है, या फिर पैन कोटिंग से। वो बीड्स जो पैन कोटिंग से बनी हुई होती हैं उनका डिसोल्यूशन रेट ज़्यादा होता है, अच्छा होता है, हायर डिसोल्यूशन रेट होता है एज़ कम्पेयर टू द बीड्स जिनको हम स्टेरिलाइजेशन या एक्सट्रूजन मेथड से बनाते हैं।
पैन कोटेड बीड्स जल्दी डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू द बीड्स विच आर मेड फ्रॉम एक्सट्रूजन और स्पेरनाइजेशन मेथड, बिकॉज एक्सट्रूजन या स्पेरनाइजेशन मेथड से बनी हुई बीड्स डेंसर होती हैं और लेस फ्राइबल होती हैं, जिसकी वजह से उन्हें ब्रेक करने के लिए एनर्जी इनपुट ज़्यादा चाहिए होती है ड्यूरिंग वेट मासिंग, और इसी वजह से उनकी डिसइंटीग्रेशन कम होती है, और डिसइंटीग्रेशन कम होने की वजह से डिसोल्यूशन कम होती है। इसीलिए सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट वेट ग्रेनुलेशन में एक रोल प्ले करता है हार्डनेस ऑफ द ग्रैन्यूल्स के ऊपर, और जो अल्टीमेटली इन्फ्लुएंस कर रही होती है ड्रग रिलीज पे। चौहान एट अल ने रिपोर्ट किया था कि ग्रैन्यूल्स जो हाई स्पीड शेयर मिक्सर्स से बने हुए होते हैं वो लोअर पोरोसिटी रखते हैं, या उनकी पोरोसिटी कम होती है जब हम उन्हें कंपेयर करते हैं ऐसे ग्रैन्यूल्स से जिनको हम प्लानिटरी मिक्सर्स से बना रहे हैं। वो ग्रैन्यूल्स जिनके अंदर पोरोसिटी कम है या लो पोरोसिटी वाले ग्रैन्यूल्स हैं, वो सॉल्वेंट पेनिट्रेशन को फैसिलिटेट नहीं करते, इसकी वजह से पुअर ड्रग डिसोल्यूशन होती है। The third factor which influences the rapid release is wet massing. Wet massing was found to play an important factor in the dissolution rate of defiling. The increasing the time during wet massing resulted in increase in bulk density of the granules. The maximum bulk density value coincided with the minimum dissolution rate, indicating that the dissolution of the drug required the diffusion of dissolution medium into granules via pores to dissolve the drug. Thus, the duration of wet massing affects the hardness of the granules and ultimately dissolution of the drug. वेट मासिंग एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो डिसोल्यूशन रेट पे इफ़ेक्ट कर रहा होता है। वेट मासिंग का टाइम अगर इंक्रीज़ कर दिया जाए तो ये बल्क डेंसिटी इंक्रीज़ करता है ग्रैन्यूल्स की। मैक्सिमम बल्क डेंसिटी वैल्यू कोइंसाइड करती है मिनिमम डिसोल्यूशन रेट पे, यानी आप जितनी बल्क डेंसिटी ज़्यादा होगी उतना ही कम डिसोल्यूशन रेट होगा, और ये इंडिकेट करता है कि डिसोल्यूशन ड्रग की एक्चुअली डिफ्यूजन ऑफ डिसोल्यूशन मीडियम की वजह से होती है। ग्रैन्यूल्स के अंदर डिसोल्यूशन मीडियम जब डिफ्यूज़ करता है तो वो पोर्स फॉर्म करता है और ड्रग को डिज़ोल्व करता है और फिर सब्सिक्वेंटली डिसोल्यूट कर रहा होता है। इसी वजह से वेट ग्रैनुलेशन की ड्यूरेशन इफ़ेक्ट करती है हार्डनेस ऑफ ग्रैन्यूल्स के ऊपर, और अल्टीमेटली वो डिसोल्यूशन ऑफ ड्रग को इफ़ेक्ट कर रही होती है। Blending is the fourth factor. The dissolution rate is affected by the type of blending equipment employed, the duration of blending of granules with disintegrant, glidant, and lubricant. It was found that the type of blender affected the distribution of magnesium stearate and hence drug dissolution. High-speed blender was employed to mix interactive mixture of theophylline with magnesium stearate before tableting. It was found that a 15-minute duration was sufficient to impair theophylline dissolution, whereas an impairment of dissolution was not observed for a lower speed blender. The impairment to drug dissolution increased with an increase in the duration of blending. This was attributed to the coating of the granules with a thin film of lubricant, a water repellent, and hence compromising the wetting of the granules. डिसोल्यूशन रेट टाइप ऑफ ब्लेंडिंग इक्विपमेंट से भी इफ़ेक्ट करता है। जितनी देर तक के लिए ब्लेंडिंग हो रही है ग्रैन्यूल्स की डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स, ग्लाइडेंट और लुब्रिकेंट्स के साथ, और जिस तरह की इक्विपमेंट में हो रही है वो डिसोल्यूशन रेट को या डिसोल्यूशन प्रोफाइल को इफ़ेक्ट करेगा। टाइप ऑफ ब्लेंडर डिस्ट्रीब्यूशन को इफ़ेक्ट करता है, जो ग्लाइडेंट की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और इसी वजह से ड्रग की डिसोल्यूशन के ऊपर इफ़ेक्ट कर रहा होता है। जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया कि लुब्रिकेंट एक कोट फॉर्म करता है ग्रैन्यूल्स के ऊपर, जो एक्चुअली डिसोल्यूशन को प्रिवेंट कर रहे होते हैं, डिसोल्यूशन को डिले कर रहे होते हैं।
हाई स्पीड ब्लेंडर अगर यूज़ करें इंटरैक्टिव मिक्सचर फॉर्म करने के लिए, स्पेसिफिकली यहाँ एग्जांपल थियोफाइलिन की और मैग्नीशियम स्टीरेट की दी गई है। अगर थियोफाइलिन को टैबलेटिंग से पहले मैग्नीशियम स्टीरेट में मिक्स करना है तो हाई स्पीड ब्लेंडर जब यूज़ होता है तो 15 मिनट या इससे ज़्यादा की इम्पेयरमेंट आती है थियोफाइलिन के डिसोल्यूशन में। अगर हम यही लो स्पीड ब्लेंडर यूज़ करें, लो स्पीड ब्लेंडर ये डिसोल्यूशन में इम्पेयरमेंट कॉज नहीं करता। इम्पेयरमेंट ड्रग की डिसोल्यूशन में इंक्रीज़ हो जाती है, इंक्रीज़ इन दी ड्यूरेशन ऑफ ब्लेंडिंग। जितनी ड्यूरेशन आप बढ़ाते जाएंगे ब्लेंडिंग की उतनी डिसोल्यूशन रेट कम होता जाएगा। इसी इफ़ेक्ट को एट्रीब्यूट किया गया टू दी कोटिंग ऑफ ग्रैन्यूल्स, जहाँ पर एक थिन फिल्म ऑफ लुब्रिकेंट या वाटर रिपेलेंट फॉर्म हो जाता है ऑन दी ग्रैन्यूलर सरफेस, जिसकी वजह से ग्रैन्यूल्स की वेटिंग कॉम्प्रोमाइज़ होती है, लीडिंग टू लो डिसोल्यूशन प्रोफाइल्स. So this was all about the granulating factors or granulation related factors. The next topic of our discussion would be solid dispersion, and we'll be discussing it in our upcoming classes. For your questions and queries, use your HULMS discussion forum. Thank you for patiently listening to this lecture. Take care of yourself and everyone around you. Allah Hafiz.